Yeah. Yeah. La 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 la. Right here, right now. Enshroud! No excuse for Allow me! time. My duty. Show them. Right here. Right now. Ah! You can't run! Well, looks like I went too far. Ha! Boom! Keep up.
fake product of something. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been taking me out. Can make you happier now. Ah, I missed it. Evil bears his fangs. Emerge. Right here. Rest and rebuild. Next time, be sure to make. Share. Right now. Right here. One with the forest. Let's nip that in the bud. Excuse me. Tuh. Ha. Tuh. Boom. God damn, bro, he does damage. Tuh. He does damage, god damn. I think we can forgo the lost and found report. Enshroud! Hold the line. Got a problem you can't solve.
Emerge right here. What the Allow hell? me. Confess! Can't see? Emerge right now. I look ruthless. Ha! I hear everything. Ha! Sa! Ha! Hold the line. Enshroud! Ha! Oh, what the hell? Oh, Keep up. Mr. Stuck. Right here. Emerge. Right now. What is the best way to handle the frenzy here? Fukumoto. Add Astra at... Thank you for complete... Add Astra...
Right here, right now. Emerge. Right here. Right now.
one with the forest. Right here, right now, right here. I'll uproot you. Huh? Huh? Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Emerge, right here. What a nuisance. Enshroud! Segla!
Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. If this rain keeps up, my fur will be dripping wet. Emerge! Right here. Emerge! Can't see. Allow me! A sight to behold. Right now. Emerge! Right now. Keep up. Enshroud. I hear everything. Sir. Ha. Emerge! Right now. Emerge! One with the forest. Bring it on. Rest and rebuild! Right now. Emerge. Right now. Allow me! Can't see. Confess. I'll uproot you. Ha!
with the forest. Ha! Sa! Ha! Emerge right now. God! Ah! Can't see. Right here. Sa! Ha! Boom! Sa! Let's nip that in the butt. Enshroud! Ha! Right now. Emerge. One with the forest. Right now. Emerge. Nothing lasts forever. Right now. Emerge. Right here. Get moving! Fracture! Rest and rebuild. Can't see. I hear everything. Boom! Sa! Ha! Sa! Emerge.
This realm is true. If you ever have any... Dun, 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 dun. Right now, emerge. Hold the line. Enshroud! Right here, right now. Ha! Tsk. Go on, open it up. Show me what's inside. Yeah. Keep up! Ha! Sa! Ha! Ha! I think we can forgo the... जैसे लदे पसंद लाखों Keep up! Can't see? I'll uproot you! Sa! Confess! Ha! Emerge. A sight to behold. Right now. Right here. Allow me.
Enshroud! Reverse! Right now, right here. Bring it on! Cyclone! Yeah. I hear everything! Ha! Keep up! Hold the line! Covenants of the Deep! One with the forest! Right now, emerge. Right here. Emerge. I'm always watching. Right now, right here, right now. Can't see? Let's nip that in the bud. Rest and rebuild. One with the forest. Right here, right now. Ha! Emerge. Right here. Right now. Hold the line. Enshroud! Emerge.
Keep up. Keep up. Ha! Ha! Keep up. Hip. Ha! Sa! Ha! Can't see. I hear everything. Sa! Ha! Ka! Enshroud! Right here. Right now. Right here. Uphill battle! Rest and rebuild! Ha! Keep up. Sa! Ha! Can't see. Ha! Boom! Keep up. Sa! Hip.
tell me that's everything. Right now. Emerge. Allow me! One with the forest. I'll uproot you. Keep up. Boom. Ha! Sa! Why is there a chest here? Ha! Dun, 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 dun. Sa! Keep up. Ha! Ha! Close enough. A new punching bag. Hold the line! Right here. Emerge. Right here. Can't see. Sa! Need. Ha! Keep up. Ha!
Enshroud! Lucky today. I hear everything! I'll be back. Ha! One with the forest. Ha! You want this one? Keep up. Keep up. Keep up. Right now. Time to right get to here. work. Emerge. Insolent shadow. Rescue rebuild. Let's nip that in the bud. I'm getting sick of this game. Now you're testing my patience. Let's away. Right now. Billowing surge. Allow me. Oh. Right here. Emerge. I hear everything! Ha! Right now. Right here. Emerge. Hold the line. Who do you think you are? Winter shall eventually come. La 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 la.
The rainforest of lore. La 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 la. Ah. तो अब 2 दिन बाद है तो थोड़ा देर खेलने का मन किया तो खोल लिया इकोनॉमिक्स कभी। हार्ड भी नहीं है तो टेंशन मत लेना ज़्यादा। इकोनॉमिक्स हो गया है। नेशनल इनकम आ रहा है और क्या क्या आ रहा था सारा कुछ कुछ ऐसे ही बैंकिंग वैंकिंग आ रहा है। और हाँ। एक आ रहा था वो सब किया हुआ है। हम्म, बस वो इंडियन इकोनॉमी बस थोड़ा रटना है वो जो इंडिया के बारे में। वो ये सब उसमें तुमको उस याद है क्या ये? हिस्ट्री वगैरह का रिलेटेड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थियोरी वाला ज़्यादा है इंडियन हम्म इकोनॉमी वगैरह में। हम्म। यहाँ पे कुछ तुमको लेना है क्या? हम्म, वो खोज रहा हूँ नीलोत्पला लोटस। वो टाइनारी को लेवल अप करूँगा ना। अच्छा हाँ। ये वो लोटस से तुम्हारा लीजा का रिसेम्बलेंस है ना? वो तो बोल रहा था। लीजा से कौन सा लोटस? एक एक प्लांट था पर्पल कलर का जो लीजा का ये उससे रिजेम्बल करता था। क्या पता था नाम था भूल गया मैं। आइडिया नहीं है मुझे। हम्म, तो सुमेरु तुम खेल लिया ना कैसा लगा तुमको? ठीक है, इजी है। इनेजुमा जैसे परेशान करने वाला नहीं है इनेजुमा। इनाजुमा में परेशान क्या करता था? स्टार्टिंग पे ब्रो कितना ज़्यादा उधर बिजली पे बिजली गिरा करता था भाई, बारिश हो रहा है दिमाग खराब होता था उसका। मैं अभी जाके पता है एक जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा वो रहता है क्लस्टर रहता है साला क्या तो कहते हैं ततारा उसका नाम। सुना? बहुत। हाँ ततारा सुना नाम है। वैसे तो हाँ सुना था। ततारा सुना। आज ही खत्म हुआ है आज मैं उसका हम्म, किया हूँ तो आज खत्म हुआ चार है दिन का अभी शायद थोड़ा देर। क्वेस्ट रहता है वहाँ, 4 दिन का शायद। नहीं मेरे ख्याल से हफ्ता भर का होगा। बहुत ज्यादा दिन चला मेरे ख्याल से। हम्म, बहुत माथा खराब चीज है। अरे ये तुम्हारा सेरेनिटी पॉट कैसे यूज करते क्या रहता है ये वो मेरे को उसमें मतलब तो खुद पूरा। का रलम बना सकता है उसपे। मेरे को वो सब काम लेकिन करने का मन नहीं है तो मैं भी नहीं उसमें बस। करता। मैं भी नहीं करता। हम्म तो काम भर उसमें काम भर है क्या? वो जो सब लोग बोलता है कि फ्रेंडशिप जो है। हाँ उस पे फ्रेंड्स। वो फ्रेंडशिप वगैरह तो फार्म कर सकता है ना। वो सब क्या होता है वही सब के बारे में जानना है, लेकिन पता नहीं लग पा तेरा रहा। जो ये कैरेक्टर वो रहता नहीं है क्या, कैरेक्टर हम्म का वो सब क्या बोलते रहे उसको? देखो आ, जैसे मेरा बेनेट है ना बेनेट का साला पता नहीं फ्रेंडशिप लेवल 9 दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेम कार्ड। नेम हाँ कार्ड हाँ के लिए हाँ तेरे हाँ। को फ्रेंडशिप वगैरह चाहिए रहता है ना। कैरेक्टर का नेम कार्ड। अच्छा उसका नेम कार्ड आता है अरे चलो एक सेकंड। अरे तेरे को फ्रेंडशिप 10 करना पड़ता है, कोई भी कैरेक्टर का नेम कार्ड चाहिए रहता है तो ठीक। तो अच्छा। उधर पे ना हम्म तो क्या कहते हैं सरेंटी पॉट पे कैरेक्टर लोग को ऐसे हम्म रख सकता है फार्म करने के लिए। हम्म। तो बस वही है अच्छा। और कुछ भी नहीं।
और कुछ वहां से ये इसका काम का निकलता है क्या, प्रीमो का कुछ? स्टार्टिंग पे शायद मिल जाएगा तेरे को अचीवमेंट्स वगैरह के लिए, पर बाद में फिर प्रीमो जेम्स तो नहीं मिलता। हाँ वो मिलता है, एक रेजिन मिलेगा हर वीक। अच्छा, ओरिजिनल रीजन। उसमें फ्रजाइल रेजिन नाम हाँ। रहता है। ऊपर वही है, हम्म। सेम ही काम है उसका, बस ना वो 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, पर अगर यूज़ नहीं करेगा तो। अच्छा, खत्म भी हो जाएगा यूज नहीं करने पे? हाँ, हम्म। तो उसको रिडीम मार लेंगे, रिडीम तो, हाँ हाँ, रिडीम मारने से 60 आ जाता है ना। हाँ वही। हम्म। तो कैसे बनता है, मेरे को तो आइडिया ही नहीं तेरे पे सेरेनिटी पॉट है? है। है ना, तो उसको क्लिक करके जाना सेरेनिटी पॉट पे, और फिर मैं ना, कैसे मेरे को तो याद नहीं है, उसको पहले शायद कुछ क्वेस्ट वगैरह करना पड़ता है यानपे के साथ कुछ। यहाँ का क्वेस्ट? हाँ उसी में मिलता है वो सेरेनिटी पॉट वगैरह, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आर्कन तुमको क्या लगती है, पावरफुल होगी? सारे आर्कन पावरफुल है, ये वाली भी होगी पक्का। हम्म। देखो, हम लोग तो हम लोग तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो हम लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे ना कि हम्म। इतना अच्छा अच्छा कैरेक्टर दे दिया है, रीरन मार दिया है, गांगी का रीरन मार दिया, हम्म। जोंगली का रीरन मार दिया, सब हम्म। लोग पागल जैसा कलेक्ट कर रहा होगा, तो पक्का ये आर्कन बहुत अच्छा होगा, तभी ये सब रीरन मार रहा है। अरे क्या कहते थे, जेंशिन इम्पैक्ट का क्या वो क्या मैप रहता था, इम्पैक्ट मैप था तो, ये सब लोग बोल रहे हैं कि वो हम लोग की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आदमी लोग अपना जल्दी जल्दी प्रीमो खत्म मार दे हम्म। और यही सब वेस्ट मार दे, और जब आर्कन आए तो बहुत लोग जो पैसा खर्च करते हैं, उन लोग पैसा खर्च करके पैसा डाले जंक्शन में, ऐसे आदमी पता नहीं उसका। कब आएगा, आर्कॉन कब आएगा पता नहीं, मे बी हम्म। 3.2 3.3, मे बी अच्छा, 3.4। 3 में आ सकता है? तो अभी बाप रे। 3.0 तो चल रहा है क्या, हेलो। हम्म। अभी 3.0 ही तो चल रहा है, तो अब कब आएगा पता नहीं। गान्यू बैनर। उतना लेट लग सकता है? हाँ लग भी सकता है, क्या हाँ। पता अगले पैच पे ही दे दे, भरोसा तो नहीं ना है भाई किसी का। एपिसोड बोल रहा था मेरा जो दोस्त लोग जो खेला, उन लोग तो बोलते कुछ एपिसोड करके बोला कुछ आएगा। होगा नहीं। Most तुम humans could खेला have तो the तुमको क्या entirety of पता their चला? fleeting lives बताओ। chronicled in but a few मैं short किया lines. Their सोनाली का stories किया, really make for आर्कन terribly dull reading. क्वेस्ट, मतलब हम्म। एकदम छोटी सी थी। क्ली के जैसे सोनाली थी, कौन है? क्ले के जैसे एकदम छोटी सी थी। अब मेरे को हम्म। देख के ऐसा लग रहा था, उसका वेपन नहीं दिखाया ना क्वेस्ट पे, हम्म। पर मेरे को डाउट हो रहा है कि वो कैटलिस्ट होगी करके। कहाँ है कैटलिस्ट, तुमको क्योंकि कैसे पता चला नो? क्ली वाला वाइब दे रहा था ना वो, मतलब दे रही थी। अच्छा, हम्म। तो अभी तक देखा नहीं है यार, देखना है तो अभी मैं आराम से देखूंगा अभी। अभी अगर अरे जल्दी जल्दी करके आर्कन क्वेस्ट खत्म मार दिया ना तो कुछ उतना मजा नहीं आएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हम्म, दोस्त लोग जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के कर भी दिया, फिर साला पता चला एग्जामों में अच्छा नहीं आया, नहीं ही अच्छा से वही लिख पाया। अरे मैं भूल गया रे, किधर किधर पे मिलता है नीलोत्पला इंटरेक्टिव लोटस। मैप खोल के देख लेना। तेरा वो मैप भी खुला नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आके खोल दूं क्या? नहीं नहीं, रहने दे, हो जाएगा, Personally, टेंशन I मत ले। think the idea of things staying the same forever is quite पप्परा परा। जैसे beautiful. खोलना तो है ही। But alas, that is simply not the way the world works. टेलहारी पता है मेरे को उतना मजा नहीं आया, चलो यूज तो किया, उसको नहीं मजा आया सही में। क्या टाइम आ रही? उसको ट्राई आउट मारा ना, नहीं अच्छा। मेरा बिल्ड देखना टाइम आ रही का।
मेरा डैमेज कितना देखेगा, मार रहा है? टाइनारी का लेवल 80 है शायद, अभी लेवल 70 है शायद। कितना मार रहा है? मारता है भाई, अच्छा खासा मारता है। 70 ये लेवल का कितना? है। और वो भी टैलेंट लेवल भी नहीं है ना, लेवल 4 का। मतलब अल्ट प्लस ई पे एटलीस्ट 20 डैमेज देगा, मतलब 20,000 डैमेज देगा हर शॉट। 70 होने पे? नहीं साला। वो भी लेवल 4 टैलेंट है, मैक्स भी नहीं किया हूँ अभी। पर मेरे पे 5 स्टार मतलब वेपन है उसका। वही। अच्छा, इसीलिए ना। और वेपन कितना किया हुआ है? वेपन शायद मैक्स्ड है, मैक्स है शायद वेपन। उसका अच्छा। वेपन बहुत स्ट्रांग है, गानियों पे भी यूज़ कर सकता हूँ। पर गानियों नहीं है मेरे पे ना, मैं खोलूँगा गानियों। मैं तो टाइनारी को इसलिए लेवल अप कर रहा हूँ क्योंकि ये इधर सुमेरो पे एक ना एक डेंड्रो कैरेक्टर चाहिए, और मेरे को मेन कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं। तो नहीं अच्छा, वो ट्रैवलर। हम्म। इधर पे। ट्रैवलर क्या है? मैं देखा भी नहीं, पता नहीं क्या है उसका। अरे कल मैं प्लाट पहुंचने वाला था यार। साला जो डी अरे यार, डी रैंक हुआ ना, जो फिर मैं वो भाई भाई भाई। इतना कर दिया? अभी भी गोल्ड 3 पे ही हूँ। 2 या 3 मैच हम्म। और हारूंगा, फिर गोल्ड 3 से नीचे आ जाऊंगा। पर हम्म। लाइक 5 मैच हारा कल और सिर्फ 2 ही मैच जीता। हम्म। 6 रैंक मेरे से रेटिंग एम ही चाहिए नहीं था। हो रहा। 6 रैंक रेटिंग चाहिए था पहुंचने के लिए प्लेट। बच्चे आर आर। आर आर हम्म। कहते हैं ना? हाँ। जो डी रैंक हुआ रे, मेरा मूड खराब हो गया। इसीलिए तो नहीं खेलने का मन कर रहा। ऐसी साले प्रेशर में उसको खेल के और माथा खराब लगता है। रैंक तो और नहीं खेल, ऊपर से मेरा एमओ नहीं लग रहा ना, खराब लगता है ना अंदर से। कभी कभी तो मेरा एम लगता है तो टीममेट खराब आ जाता है, खत्म चीज है बिल्कुल। अरे पूछ मत भाई, कल मैं जो लोग के साथ कह रहा था तो उसके डोनट के दोस्त लोग थे। हम्म। वो डायमंड और वो प्लेट 3 वाले दोस्त थे, तो अब वो हम्म। लोग के साथ खेल रहा था। अरे भाई वो लोग जो कमेडियन है ना, क्या बोलूँ मैं। ए- ऊपर से अपना जो हम्म। चेम्बर था और फिनिक्स था ब्रो, फिनिक्स बॉटम फ्राई कर रहा था, 1 किल पे था फर्स्ट हाफ पे, बताऊँ। पर मतलब ये मेरे को तो वो सबसे दिक्कत नहीं होता है, पर हम्म, पर मेरे को ऐसे लग रहा था भाई ये कभी वैलोरेंट खेला है या नहीं। इतना खराब खेला था? अरे तो ज, जस्ट इमेजिन कर ब्रो, एक डुलिस्ट लेके 1 किल, वो भी फर्स्ट हाफ पे। हम्म। कुछ ज्यादा ही। फर्स्ट मतलब पहला पहला 13 में मैच में हाँ, ना? फर्स्ट बहुत 12 राउंड्स ज्यादा में, नहीं हो फर्स्ट गया? 12 राउंड्स में, हाँ। बहुत ज्यादा हो गया भाई, बोलना चाहिए था। नहीं है, वो बोल रहा था जो था मेरे साथ। हम्म। अच्छा, बोल रहा था? हाँ। गंदा बोल रहा था क्या? गुस्सा आ जाता था कभी कभी, तो बोल देता था अबे फिनिक्स। साला। मेरे को तो देख के उसको ऐसा लग रहा था भाई ये अपने भाई के अकाउंट में है वाला है। हाँ, बहुत लोग होता है। खराब, ये बहुत खराब दिन चल रहा होता तबे वैसा होता है, नॉर्मली नहीं होता। अरे यार, इसका साला। क्या हो गया? तेरे को जोंगली मिला कि नहीं? बहुत। तुम जो नहीं किया ना भाई, अरे बहुत खराब है भाई, कोई सुन। नहीं किया मेरा। बहुत खराब। तू अपने दोस्त लोग को दे देता। सबका एग्जाम चल रहा है ना, जो हाँ, फिलीपींस है उसका भी साला एग्जाम चल रहा है। अब मैं हम्म। किसको बोलूं, क्या मुंह से बोलूंगा? अरे मैं करना चाहता तो कर देता यार, पर मेरा बिल्कुल भी ना, मैं बता रहा हूँ। अब तू टेंशन मत ले रे, जोंगली फिर से आ जाएगा। उसका काहे टेंशन ले रहा है। साला वो दोस्त में फ्लेक्स मारता है, बोलता है भाई अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, बस शील्ड निकाल लेते हैं, भर भर मारते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इतना मतलब मेरे खराब को देख, है। मैं जोंगली लेवल 90 कर दिया हूँ, फिर भी बिना जोंगली के खेल रहा हूँ, बता भला। जरूरत ही नहीं पड़ता भाई, ये गेम हम्म। उतना हार्ड नहीं है जितना इंसान लोग सोचते हैं। हाँ, थोड़ा Right टाइम now. लगेगा हम्म। आदत डालने का, पर Right here. उतना भी हम्म। हार्ड नहीं है ब्रो। मैं देखा हूँ इंसान लोग बिना जोंगली के स्पाइरल अभी क्लियर करते हैं। स्पाइरल अभी इसमें तो मत पूछो भाई, इतना खराब हो, इसलिए तो बहुत ये बहुत जल्दी चाहिए था मेरे। अरे बहुत गंदा हो रहा है मैं स्पाइरल अभी इसमें। मेरा कोकोमी नहीं है इधर पे।
नहीं। हाँ, इस बहुत खराब जगह है। बैठ के पूरा तुमको सिमुलेट करने में कितना देर लगा? एक एक दिन में हो गया था? याद नहीं है मेरे को। मतलब मैं आराम से कह रहे, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में खत्म कर दो वाला नहीं था। अच्छा, आराम से हाँ। नॉर्मल तरफ। और मैं उस हम्म, सोनाली के क्वेस्ट पे बहुत आराम से किया था ब्रो, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो हाँ। अरे हम्म, क्या ना कुसुनाली, सोनाली कुसान को क्या नाम था रे उसका, मैं भूल गया। मैं से एक छोटी सी लड़की जिसका वो उसके पास घूम के आते हैं, वो उसको जानता हूँ, पता नहीं क्या नाम था उसका। कोलई कोले कोले कोले। हाँ, नहीं नहीं, बस वहीं तक तो पहुंचा ही नहीं साला। आ, मेरे को ये थोड़ा सस्सी आदमी वो लगा। तो टाइनारी का वो है, क्वेस्ट है वो। हम्म, कोले वाला टाइनारी हम्म, का क्वेस्ट है। हम्म, वो मर गया। नहीं 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 यार, मैं टीपी मार देगा इधर उधर, नहीं। मर गया। चलो लेवल 80 कर सकता हूँ अभी मैं वो बना के आ रहा। क्या बोलते हैं इसको। हम्म, What a nuisance. अच्छा रुकना तो, अगर वुल्फ वाला मैंने नहीं किया होगा तो मेरे को वुल्फ नाम से फिर चल जाना। क्या? हम्म, बस तो चल गया, कोई नहीं, छोड़ दे। नहीं नहीं, आ जाऊंगा, बता ना क्या। मैं सुन नहीं रहा था। ना ना, हो गया है। मेरे को वुल्फ वाला करना था यार, लगता है वो कर दिया है। सही है। वुल्फ वाला करना। अच्छा क्या वुल्फ। नाम? एंड्रियास। वुल्फ। एंड्रियास एंड्रियास जो भी नाम। यस। इसको करने में हर टाइम मेरे को दिक्कत होता है, बाद बाकी सब हो जाता है मेरे जब से। जब सेरेनिटी पोर्ट स्टार्ट पे आया था ना, तब मैं अपना रियलम हम्म, रियलम बिल्ड किया था, पहला वाला। अभी मैं हम्म, अपना चारों रियलम अनलॉक कर लिया हूँ, चारों नहीं शायद 3 अनलॉक कर लिया हूँ। पर हम्म, अम, पर अब बिल्ड नहीं करता, मन नहीं करता क्योंकि हम्म। तो लगता है एक बार जब मैं जेंसी प्लेयर नहीं था तब तो मेरे को अपना सेरानिटी पॉट दिखाया था। तब देख के लगा था कि भाई एकदम आर्किटेक्ट है। अच्छा हाँ, अभी भी देखूंगा। तो सेरानिटी पॉट एक दो देखा जो बहुत अच्छा से किया हुआ है। हाँ। अरे मेरे पे भी है फ्रेंड लिस्ट पे, जो लोग सेरेनिटी हम्म। पॉट के लिए अब खेलते हैं गेम भाई। वाह भाई। Rebuild. वो काहे सेरानिटी पॉट के लिए कौन क्यों खेलेगा कोई भी? अबे तो मजा आता है ना भाई। लेकिन मेरे को उसका बिल्ड मेरे को पता नहीं, वो सब सजाना जो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, रुक जा, इधर रहना चाहिए वो मैं नहीं चेंज अच्छा करके लगता है। देख रहा हूँ मेरा This रियलम जो realm is बिल्ड किया cute. था। मेरे को स्विच हम्म, स्विच स्विच कैसे करता है, ये रहा ना, कौन सा वाला था वो? एमरल्ड पिक था, कौन सा था? अबे मेरे चारों अनलॉक्ड है, क्या चीज? चारों रियलम अनलॉक्ड था मेरा। देख, देख, बढ़िया तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर मैं बना के अरे किसी को नहीं रखा हूँ। ये क्या कर दिया हूँ मैं इसको? अरे यार, इतना बढ़िया था। अरे आज भाई, इसको आधा अधूरा छोड़ दिया और ये बना रहा था। छी भाई। क्या हो गया? इसको, अरे ये एक रियलम है ना, उसको बना रहा था, आधा अधूरा छोड़ दिया हूँ। हम्म, क्या ही दिक्कत है, वापस बना लेना। नहीं बनाऊंगा तो नहीं, बोरिंग लगता है क्योंकि This realm is बोरिंग true. लगता है पता है। ब्रो बहुत ज़्यादा। वो अरे इतना। हाँ, मेरे को मैं पता है आज का एग्जाम के बारे में तुमको बताना चाहता हूँ। कौन सा था आज का एग्जाम आज? एग्जाम ना, ईएनटीपी सब्जेक्ट जानते हैं? नहीं, ये क्या है बे? ऐसा ऐसा सब्जेक्ट था नहीं। फुल फॉर्म बताना उसका क्या था। एंटरप्रेन्योरशिप। उसका This भी एक realm is सब्जेक्ट है, true. व्हाट द हेल। जैसे पीएचई सस्ता बायोलॉजी है, वैसे If you ईएनटीपी ever have सस्ता any बीएसटी है। मुझे तो पता नहीं था ब्रो इसके बारे में, व्हाट द हेल। सही में। मतलब ऐसा So, सब्जेक्ट हो सकता है, इसके बारे में आइडिया है, पर साला हम लोग को स्कूल हम्म, पे ये सब देते ही नहीं थे बे। क्या चूतिया स्कूल पे पढ़ाई किया हूँ लग रहा है अब मेरे को।
अरे हम लोग को मेरा साला मेरा स्टेट में सब टॉप स्कूल में मेरा स्कूल आता है। फिर भी साला ये इसमें कॉमर्स में नहीं दिया तुम्हारा आईपी, जबकि साइंस में दे दिया। बोलता आईपी लेना है तो साइंस ज्वाइन करो, बोला बड़का ले लो इसलिए। आईपी आईपी क्या का? कंप्यूटर बोलो आईटी। आईटी मैं आईपी सुना ब्रो, आईपी एड्रेस वाला। हाँ मतलब, अरे भाई At the आईपी forest. ये उसको आजकल वही कहते हैं। नहीं आईपी ही तो कहते हैं, हाँ आईपी। ये कुछ फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं, Keep up. लेकिन आईपी ही कहते हैं, आईटी नहीं कहते। ये वाला एक बिल्ड किया हूँ, आधा अधूरा ये भी छूटा है यार। वो भी क्या दिन थे यार, उस टाइम जेंशिन पसंद किया करता था मैं। अब उतना इंटरेस्ट नहीं है गेम पे। अब तो पूरा नंगा छोड़ दिया हूँ। तुम वैलोरेंट इतना देर खेलता है वो तो, वैलोरेंट से This मतलब road एकदम कभी कभी रोना आ जाता है, नहीं आता रेज क्विट, और मतलब गुस्सा आ जाता है यार, गुस्सा एकदम खत्म लगता मैं है। उतना देर कहाँ खेलता हूँ, मैं तो नहीं खेलता उतना देर। वाले यार कितना देर खेलता हूँ? मे भी 2 घंटा 3 घंटा। तो रेस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं? हमको लगा खेलता होगा तुम। नहीं खेलता, म्यूजिक कौन बनाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा मेरे को सुनना भी था, वो पता है बहुत दिन से सुनने हुआ ने। this road सारा पहले has ये डिस्कॉर्ड भी डाउनलोड इधर था। आ इधर आ, रुक जा रुक जा। if you अभी ever स्ट्रीम head कर in रहा हूँ रे यूट्यूब पे, अभी नहीं सुना सकता। एक ये तो अच्छा स्विम कर रहा है। इधर मेरे सरेनिटी पॉट पे आ। रिक्वेस्ट टू जॉइन सरेनिटी पॉट, फ्रेंड लिस्ट से जाना, उस पे रिक्वेस्ट टू सरेनिटी पॉट ज्वाइन। अच्छा अब अभी नहीं रुक जा थोड़ा, ये डोमेन मार रहा चल मैं तब तक फिर तैनारी को लेवल अप कर लेता हूँ। है। तो आर्टिफैक्ट्स देखा, कैरेक्टर के लोग चाहिए थे तो डोमेन आया। तू मेरा तैनारी का स्टैट्स देखा? तो देख रहा है, देखता है, मोबाइल में खेल रहा हूँ ना, पीछे वगैरह तो कुछ करता ही नहीं, मोबाइल में दिक्कत होता है साला। मेरे को मैं मोबाइल नहीं खेलना छोड़ दिया ब्रो, क्योंकि फ़ोन गर्म हो जा रहा था मेरा। गरम ओवर हीट नहीं होता, थोड़ा सा गरम होता है। अरे जोम्बी का ये आर्ट अच्छा है भाई, इसका जो आया है मेरे साथ 40,000 में दे रहा है। अभी अभी तो मैं थोड़ा देर पहले जोंगली अपना कंप्लीट बिल्ड किया हूँ, कंप्लीट। कितना दे रहा है? क्या चीज़? डैमेज के लिए नहीं बिल्ड किया ब्रो, शील्ड के लिए किया हूँ। अब हाँ मैं गिर गया। अब मैं निंगवांग के साथ उसको उसमें यूज़ करूँगा, स्पायरल अभी इसमें जियो रेजोनेंस के लिए। मज़ा आएगा। बे यार बहुत खराब है भाई, मोबाइल में इतना गंदा मैं नहीं खेलता। देख के मेरे को शर्म आया मेरा। मैं कोऑप नहीं करूंगा, नॉर्मल में करूंगा। हाँ भी साला। मैं 60 पुल हो गया, मैं ऑलमोस्ट पीटी पे पहुँच गया हूँ। मेरे को 65 हो गया है, लेकिन फिर भी साला। मेरा 60 हुआ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। If you press a स्टार्टिंग में button तो and drive 65 to ही होता table, है ना। you can make an हाँ attractive and 65 handy है। bookmark. This is a 48 49 50 51 52, अबे 53 हुआ बे, what the hell। कैलकुलेशन गलती हो गया। अभी लॉन्ग वे हो भाई। वो ओ तेरी। ये वाला एक है जो अच्छा बिल्ड करके रखा हूँ रेलम। यूट्यूब में लाइव है ना, तो अपने यूट्यूब पे लिंक भेज के देखता हूँ। हम्म। यूट्यूब पे लिंक भेज के, यूट्यूब में बोला ना लाइव है। हाँ यूट्यूब में हूँ ना। दे ना यूट्यूब पे लिंक, मेरे पास है ही नहीं। क्या? मेरे पास लिंक नहीं है, तो आज चैनल ही नहीं है मेरे पास, दे ओ ना। योबो विफ्स लिखना आ जाएगा तेरे को मेरा चैनल। सबको देखता हूँ। विफ क्यों रखा? और कुछ सोच भी नहीं रहा था।
can't see. 君の虜になってしない。रेस फिश। ये क्या है? अरे लंबे लंबे वाले को डालूंगा, मजा आएगा। ना। योगो है। वो पूछ रहा था तुमको बाइक चलाने आता है क्या? नहीं आता ब्रो। पता है मैं ट्राई मारा और मैं बहुत गंदा गिरा। फिर पापा मना कर दिए, बोले कि हाथ पैर तोड़ लोगे 12 में, एग्जाम देने में हाँ दिक्कत हो अभी जाएगा, मत कर, साल बर्बाद। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हम्म, मत कराओ। मेरे को करने का मन था लेकिन वो पता है बाइक से गिर गया एक बार, इसलिए पापा डर गए साले। मेरे वो को भी मेरे को भी नहीं चलाने आता ब्रो। मेरे को देख, मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ, मेरे को चलाने नहीं आता गाड़ी। अभी कितने साल के हो अभी? मेरे को अभी 21 लग जाएगा। स्कूटी तो चलाने आता होगा ना? स्कूटी आता है। अरे बाइक, हम्म, बाइक पापा पे था, पर बाइक पापा चाचा को दे दिए, फिर मेरे को कभी बाइक ही नहीं मिला। अच्छा। वैसे नॉर्मली चाचा को दे दिए, कहे? उनका शौक नहीं था चलाने का। हाँ। मेरा घर में मेरे ख्याल से मैं जॉइंट फैमिली है ना, तो हम्म, एक बाइक पापा का, एक स्कूटी चाचू का, हम्म, एक स्कूटी दादाजी का, लेकिन अब दादाजी ऑफिशियली रिटायर हो गए। तो हम्म, उनका लंग्स 2 महीने पहले लगते हैं एडमिट हुए थे, और उनका बोला लंग्स 70% डैमेज हो गए। तो अच्छा, अब उनके पास इतना ताकत वाकत नहीं रहा, तो नहीं चलाते। हम्म, समझ आओ। तो कर क्या रहा है अभी? अरे भाई फार्म मार रहा हूँ। क्या फार्म कर रहा है? आना है क्या? नहीं मैं आ रहा हूँ, अरे रुकना। तेरा वो वुल्फ को मारना है ना? नहीं, हो गया तो कर दिया था, मेरे को याद नहीं था। मैं तो अभी एक अरे भी नहीं किया वीकली को। आना है ना, आ जाओ आना है तो वो उसमें बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है उसका? सिन्योरा। सिन्योरा और वो वाटर वाली साला। आ रहा, रुक जा 1 सेकेंड। हो गया। सिन्योरा तुम कर लेते हैं अकेले? तेरे उस दिन स्ट्रीम पे ही किया था तेरे सामने। अच्छा हाँ हाँ, हाँ। पहले एंथनी एंथनी भी खेलता था क्या? एंथनी खेलता था यार, फिर मैं जब छोड़ा ना, तब वो हम्म। बंदा बोलता है मेरे को, भाई मेरे को बता दे कैसे खेल मतलब गेम के बारे में। अरे भाई एक से एक से नेता, अरे तुम लोग क्या बोलूं मैं। जब छोड़ देता है सब तो हम आते हैं भाई। एकदम अजीब अजीब टाइम पे। मैं फिर इसको छोड़ूंगा खेलना अब स्टोरी वगैरह है नहीं, क्योंकि कहाँ है हम्म। रे तेरा अकाउंट, कहाँ है ये रहा। अरे मेरे को सरेंडरी पोर्ट पहले छोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा छोटा सा चीज करने दे। हम्म। इंडोर पे करना पड़ेगा क्या? Keep up. Ha. अरे मैं वो फ्रेंडशिप फार्म करने के लिए कैरेक्टर्स रखा था ना, अंदर पे रखा हूँ कि बाहर पे रखा हूँ याद नहीं है। Keep up. अब मैं यही बहुत रिलम पे सारा रहूँगा ब्रो। ये रिलम थोड़ा सुंदर है, क्योंकि वो वाला एकदम खाली छोड़ दिया हूँ जो नया अनलॉक्ड है। कौन सा चार्जर है? मेरा तो एक बीच साइड वाला है बस। तुम्हारा तो सब कूल आइल पे है, उसका नाम कूल आइल है वो जगह का। सही जाए। ये सरता है। एक है बादल के ऊपर, एक है पहाड़, एक है बीच। कौन सा है? क्या बोला? कूल आइल्स? अच्छा हाँ, यही तो मेरा है। हम्म, पता था मेरे को वही होगा। हम्म, तुम्हारा सबसे अच्छा कौन सा बिल्ड है, क्या बोलता है? क्या चीज़, क्या बिल्ड है मतलब?
सबसे अच्छा रन कौन सा बिल्डिंग? मेरा, अरे नाम भूल गया रे, रुझे देखता हूँ। टरन 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 टरन। यार नहीं नहीं होता सर। अरे कुछ दिन तक तुम पगलाओगे फिर फालतू लगने लगेगा। स्नैपचैट यूज करता है क्या? योगेश हम्म। स्नैपचैट यूज करता है? हम्म। फालतू लगता है ना तुमको भी? यूज ही नहीं किया आज मैं तक। सोशल मीडिया से जितना दूर रहूँ मेरे दिमाग के लिए अच्छा। क्या क्यों? फालतू जगह ब्रो। ऐसा हुआ क्या है तुम्हारा लाइफ में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। टाइम वेस्ट लगता है वो सब चीज़, और कुछ नहीं। अच्छा, तो बाहर निकलते भी हो कि नहीं आए घर से? निकलता हूँ ज़रूरत पड़ता है तो। फालतू क्यों निकलूँगा? वही मैं भी नहीं निकलता हूँ, लेकिन फिर मेरा सोशल इंटरेक्शन लोगों से ना खराब होने लगा आजकल। समझ ही नहीं आता बात बात क्या करूँ। तो आदमी लोग बोल रहे निकल से। मैं भी सोच रहा हूँ इसको निकलने का ऐसे घर से बाहर बार, लेकिन ऐसे घूमना फिरना भी नहीं अच्छा लगता। मेरे दोस्त लोग के पास बहुत टाइम रहता है, वो लोग घूमते ही रहते हैं। हम्म। नहीं, घूमना इसलिए भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं मतलब अकेले, जब मेरे पास टाइम रहता है तो दूसरे के पास नहीं रहता। दूसरे के पास साल में दिया तो अच्छा मुझे ज्वाइन करता है। ब्रो तेरा आवाज़ अटक क्यों रहा है? मेरा इंटरनेट बैड है क्या? एक सेकंड। तुम्हारा आवाज तो बहुत अच्छा से आ रहा है। मेरा ही गड़बड़ा। एक अभी सेकंड। ठीक आ रहा है भाई? ठीक है, अब ठीक है। कहाँ? मेरे को एक तो डोमेन अनलॉक करना है रे अभी भी सुमेरो पे। एक दो टीपी बचा है शायद, और दो टेलीपोर्ट वे पॉइंट बचा है। हाँ, दो टेलीपोर्ट वे पॉइंट, तीन टेलीपोर्ट वे पॉइंट, चार टेलीपोर्ट वे पॉइंट बचा है। और अरे और दो डोमेन बचा है। एक सेकंड, मेरे को छोटा सा काम करना है इधर पे, सुमेरो पे, फिर आ रहा हूँ। ठीक। सिन्योरा मारना, और किसको मारना है? और वो पानी वाली जो वाटर इज एवरीथिंग वाटर टेक शेप्स वाली। हाइड्रो हाइपोस्टेस नहीं, क्या नाम क्या था? नाम है उसका? जो लीवर मैं उसको बोल रहा ना। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? ओशियनिड। ओशियनिड। ओशनाइड, ओशनाइड, हाँ वही है। दंग 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 दंग। सुमेरु के बाद कौन सा खुलेगा यार? रेगिस्तान, उसका नाम क्या था? नहीं, रेगिस्तान भी नहीं, जो नया आर्कन आएगा वो कौन सा? बानी का आएगा, ठंडा का आएगा, गर्म का आएगा, क्या आएगा? वही तो, डेजर्ट, डेजर्ट लैंड रहेगा जो भी अगला आएगा, जहाँ तक मेरे को पता है। अच्छा, उसका भी अलग आर्कन रहेगा? ऑब्वियसली। तो वो जो एक लड़की डांस कर रही थी, क्या नाम है, जो नई कैरेक्टर आने वाली है? फक, वाइफू भूल गए क्या नाम था। मेरे को भी याद नहीं आ रहा। जेंशिन न्यू वाइफू लिखा हो तो साला सबसे पहले इसका क्या नाम है, इंटरेस्ट ही रहता वही सब लोग का। ये ना सबसे वाइफू है। न्यू, क्या नाम था न्यू कैरेक्टर? हाँ, इस साला लड़का मेरे को लगता ही नहीं है। ये जो डेजर्ट में आने वाला है एकदम लड़की लग रही थी वो। क्या नाम है? साइनो, सिनो, साइनो। शायना नाम है इसका, जो बाल और लाल किया था। हाँ, नाम ही नहीं दिखा था कुछ। तू किसका बात कर रहा है? उसका एलिमेंट क्या है? हाइड्रो है, इलेक्ट्रो है, क्या है? दो दो नया कैरेक्टर्स आने वाला है ना।
गेंशिन न्यू कैरेक्टर एक नहीं कैंडेस चाहिए। नाम है, एक साइनो नाम है, और एक हाइड्रो 5 स्टार है, उसका नाम याद नहीं है मेरे को। नीलो जो तू डांस कर। डोई हाँ वो नीलो डोई कुछ नाम है उसका, हाँ हाँ। हाँ ये डेया डेया नाम है, क्या नाम है, DHY। अब ज्वाइन कैसे नहीं कर पाया तेरे को, क्या हो गया? ओह सॉरी सॉरी, हाँ अब करो। नीलो, हाँ नीलो नाम होगा वो हाइड्रो कैरेक्टर का। सुमेरु पे सब सब इंडियन नेम्स है ब्रो उधर पे। है नीलू। हाँ तो नीलू सब इंडियन इंडियन नेम है। क्या नाम है? डेया, हाँ डेया। तेरा अबे कॉल। देख रहा है ये, रुको रुको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अब हाँ वो स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा है। अच्छा कहाँ पे भेज रहे हैं, ये तो भेज रहे हैं क्या म्यूजिक बॉक्स में। नहीं नहीं इसका कैरेक्टर टाइनारी का लेवल अप करते हैं। अरे ये नहीं है रे, अब ये क्या है? स्क्रीनशॉट। फंगा इल्यूमिनेशन पॉलन। एक सेकंड ना, 2 मिनट में फिर आ रहा मैं। अच्छा रुक जा, तेरे मैप में भी ये कर सकता हूँ मैं। चलो चलो सुनहरे चलता हूँ साला, वहीं पे खोलूँ एक दो ये तू देखो सिन्योरा क्लियर करूँगा बोल रहा था। हाँ हाँ चलो ना, तुमको अभी करना क्या है? मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बस तो नहीं ना, वो कर रहा हूँ, क्राफ्टिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा तो हाँ तो सिन्योरा में आपका आता है, हाँ हाँ बताना मैं तुमको इनवाइट भेज दूंगा। हाँ भेज दे। क्राफ्टिंग तेरा हो गया? हो गया। अरे तेरी तो जल्दी। मेरे को ये सिन्योरा को मारने के लिए क्या कौन सा चाहिए, तो कैरेक्टर आग यूज़ से करूँ बता, कौन सा कैरेक्टर यूज़ करूँ बता। सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर कौन सा है मतलब, सबसे मेरा ज्यादा यामी को ठीक है, और एक हीलर रख लेता हूँ छोर, या फिर जोंगली शील्ड ट्राई करूँ क्या? Traveling to other worlds is all that anyone seems to be अरे writing लेकिन फिर तू about. मेरे तू क्या पास यूज़ वो, करेगा उसके हिसाब से लूँगा बता। Goodness knows मैं what they ये भी find so नहीं पता। disappointing about their हाँ own ले ठीक है, world. तो फिर मैं In हीलर ले trade, लेता हूँ the फिर। तो perfect hunter फिर leaves कहाँ no गया? trace. चा यार मेरे को कैरी कर लेगी, टेंशन मत ले। नहीं यार मेरे को तो डैमेज देख रहा हूँ अच्छा। मैं बता रहा हूँ, अगर अगले पर बैनर आएगा ना यार मेरे को का, तो You're मैं और trembling. कॉन्स्टलेशंस के लिए उसको Is it the निकालूंगा। cold अभी or C1 है, just cowardice? कम से कम C3 ट्राई करूँगा, C3 एटलीस्ट ट्राई करूँगा अगले बार। Emerge right here. तो उसके लिए बचाएगा अभी, नहीं जब आएगा तो देखा जाएगा। अरे तेरी Emerge. Nothing lasts forever. Right here. अरे Emerge right here. पूरा Light it into the frozen void. अच्छा 14,000 यार निको का डैमेज है। Right 14,000 वो 14,000 ई का मारेगा। डैमेज है, 14,000 उसका ई का डैमेज है, हर ई टिक पे उतना मारता है वो। यार तो सर अल्ट कितना देता है? अल्ट पे एक एक शॉट Emerge. 30,000 के आसपास करता है, मतलब टोटल पे 1 लाख के आसपास चला जाता है। अच्छा ये मिला जुला के एक एक वो मारता है, एक सिंपल शॉट मारता है, और फिर 3 उसके ई के हिसाब से मारता है, तो टोटल पे 1 लाख पहुंच जाता है वो। तुम्हारे यार में मैं क्या बोल रहा हूँ, कोकोमी से वो आ रहा है क्या मेरे को हील? मेरे को समझ नहीं आता हील कहाँ हो पर सकता है। अरे तेरी Witness the power of the wild. Hold the line. है। ये देखे कोकोमी डैमेज देखेगा, ये देख कोकोमी का डैमेज। तो बोलते ना कोकोमी डैमेज नहीं करती, भाई देखो कोकोमी डैमेज नहीं करती, देखो जरा। Embrace your searing reckoning. Emerge. हर शॉट पे 7,000 6,000 डैमेज ब्रो, बहुत ज़्यादा है किलर के लिए। Right here. Emerge. ये अल्ट वापिस आ गया ले। Billowing surge.
Not every wound will heal. ये बैनेट के अल्ट पे 8000 डैमेज कर रहा है, व्हाट द हेल। मुझे लगा बेनेट का अल्ट और कम करता हूँ डैमेज। Emerge right now. अगर C6 रहेगा तो कम कर देगा, पर कैटलिस्ट है, मेरा कैरेक्टर तो नहीं करना चाहिए। आजा आजा, हिल दूंगा अगर दिक्कत होगा तो। चेक फुल हो गया। Right here. Emerge. हाँ यार, ये भागते रहती इसलिए मज़ा नहीं आता मेरे को, इसलिए आयाका को लाता नहीं हूँ मैं इधर पे। मेरा आयाका भी मतलब ठीक ठाक डैमेज कर लेती, एकदम भयानक डैमेज नहीं Right देती। here. Emerge. अरे शिट, मेरा बेनेट Not every wound will heal. Right here. क्या हो मैं गया? बहुत पहले मर ये देखो, ये चुका हूँ। भागते रहती नहीं, इसीलिए मूड खराब होता है मेरा। मर गई। अच्छा, मर गए। Ask for redemption. इधर उधर इधर उधर। आयाका का अल्ट मिस हो जाता है भाई, इसके वजह से इसीलिए नहीं लाता इधर पे। बाकी आयाका इसमें बहुत सेकंड फेज पे बहुत बहुत मस्त खराब है। लगता है। और फिर वो बाल है ना, बाल पे भी आयाका मस्त है, क्योंकि मतलब जब वो उस पे जाती है ना डिफेंस फेज पे, शील्ड वाले फेज पे बाल जाती कौन? है। बाल ए उसका भी है ना, अच्छा। वीकली बॉस। हाँ। तू अनलॉक नहीं किया है क्या? किया हुआ, उसको खेलता ही नहीं हूँ, मेरे से कभी नहीं मरती। मैं चल कितना भी कुछ भी कर लूँ, चल चल, कभी नहीं मारेंगे मरती चल। भाई। सही में। मैं सोलो चलो, क्लियर चलो, किया हूँ ब्रो उसको। कैसे कर लेते हो, बाप रे बाप। उस पे भयानक एचपी है कुछ, मैं देखा था कहीं तो 1.5 मिलियन एचपी है उस पे। उसपे करती है, और ऊपर से जब उसका वो हाथ निकलता है, हाँ तो और गंदा लगता है बस, हाँ उसमें। वही है। अगर डिफेंस वगैरह तेरा अच्छा है ना, डॉज वगैरह अच्छा कर लेता है, तब तब उतना हार्ड नहीं है उसका। मैकेनिक्स बस पता करना है तेरे को कैसे होता है, फिर इजी है वो। एक दो जगह पता है कि कैसे उछलना है, जब आता है उसका वेव टाइप का, उसमें बस उछल जाओ। मेरे को हाँ, इनवाइट मेरे को करो। स्टार्टिंग पे वो पता नहीं था, पता है। मैं बोल देता, अरे मेरे को यहाँ करना क्या है भाई, मैं मर जाता था हमेशा। हाँ, बहुत लोगों को देखता हूँ ट्रैवलर का जियो वाला लगा के ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे भी बच जाता है। हाँ, तो फिर वैसा है तो वेंटी ले जा सकते हैं उधर पे, वेंटी का हम्म विंड टनल। वही तो, वो भी काम आ सकता है। मेरा ये दोनों काम आएगा, चल जाएगा। यार मेरे को तो कोई डैमेज करेगी उसको। करेगी, करने के लिए उसका वो सब तोड़ने के लिए इलेक्ट्रो कैरेक्टर चाहिए रहता है ना। वो जब वो वन शॉट वाला डैमेज करने वाला रहती है तो उससे पहले एक पर हीलर नहीं रखे अपन। हाँ, वो दिक्कत है। मैं हिल देख लूंगा, अपना मैनेज कर लूंगा। यार मेरे Right को now. कम Right डैमेज strike करेगी edge. करने के लिए, पर करेगी जरूर। Take flight. Missions now. अरे अरे तुमको पता है यो बॉय, मेरे स्कूल में कभी कभी लगता है कि इतना ज्यादा करोड़पति आदमी लोग हैं ना, तब एक एक का क्या हुआ, फोन छीना गया, ठीक है। तो ये उसके पापा को, ये उसकी मैम से बात करना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं उसकी मैम से कुछ उसका पर्सनल है, उसके पापा का या क्या नहीं पता। लेकिन उसके पापा, उसका क्या हुआ कि एग्जाम हॉल में ना बहुत लोग बैग में मोबाइल रखा होता है, मोबाइल स्कूल में ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर ऐसे हम लोग नहीं जाते एग्जाम टाइम कुछ नहीं बोलते, हम लोग सबको पता है। लेकिन कल क्या हुआ पता नहीं, पहली बार तो आया और बोला कि जो भी मोबाइल लाया दे दो, नहीं तो हम चेक करेंगे। साला वो रखा हुआ था, और क्या कहते हैं, मेटल डिटेक्टर, बोला कि हम चेक करेंगे तो तुम्हारा मोबाइल देंगे भी नहीं। किधर मार रहा है? ये वाला हो गया। तो फिर डर के मारे ना सब अपना मोबाइल दे दिया, और सब मोबाइल दे दिया। मेरा एक दोस्त अपना मोबाइल देता है, उसके पापा को जाके बोलता है कि मोबाइल ले ली, तो उसके पापा बोलते हैं जाओ आईफोन 13 ले लो, 70,000 का। ले भी लिया साला, जबकि एग्जाम में उसका फेल होगा, क्या करेगा भगवान जाने। सारा फेल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी साला अभी क्या ही काम है साला आईफोन का, बस साला फ्लेक्स मारने के लिए, अपना अमीर गिरी दिखाने के लिए।
भैया पैसा तो करे भाई। बहुत खराब लगता है उनको। तेरे क्यों मुझे खराब साला लगता है बे? पैसे। तेरे को तो खुश रहना चाहिए, अरे तेरे दोस्त का आईफोन है। खुश। क्या बोलूं, जेलसी नहीं है, बस लगता है कि भाई तुम इतना छोटा एज में इतना आईफोन आईफोन ले रहे हो, तो बड़ा होके क्या करोगे? बड़ा होके तो जब जाके बोलोगे कि भाई जब पैसा रहेगा पापा। तो खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा? और क्या, वो भी खरीदेगा जब पैसा रहेगा चलो तो। अभी ये मेरे क्या पास भी है? पैसे रहेंगे। ओ ये फेस आ गया। ये क्या है? अरे ये उछलने वाला है। अरे मिस हो गया एक। मैं मिस करूंगा, मर जाऊंगा थोड़ा। मर गया। तीन तीन एक साथ मार दिया। कर ले, रिवाइव कर ले। I'm always watching. कर लिया। मैं बने शॉर्ट में हूँ, ये भी मालूम। ये दिखाया का कल। 15,000। बाप रे बाप, मारते जाए। कितना टोटली देता है बाप? पता नहीं, देखना पड़ेगा। वो बैनेट कैल पे और डैमेज दे रहा था। बैनेट एक तरफा कैरेक्टर है ब्रो, मजाक भी नहीं कर रहा है। एक्चुअल 5 स्टार बिना बताए वाला। अबे ये फिर शील्ड भर गेन कर लेगी, इसको मारना पड़ेगा। मेरा यामी का कहीं कहाँ चला गया? मेरा यामी का कहीं कहाँ चला गया? Emerge. गायब हो रही है यार। ये आ गया, हो गया खत्म। ये मर गई ले। Only तेरे को इसको मारने में इतना मेहनत लग रहा था। मैं अभी भी ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। अकेले में भी दिक्कत हो पर मेरे अयाका पे भी 5 स्टार वो है वेपन है ना, तो थोड़ा। अच्छा हाँ, उसका वही छोटू वाला स्वॉर्ड है ना जो नहीं काम आता है? क्या नाम था? क्या? आयाकन कौन सा स्वॉर्ड लगाया हुआ है? जेट कटर डला हुआ है मेरे में। वही लगता ही है ना, वही उसका मेन मतलब है। नहीं, उस पे दो और मिस प्लीटर भी चलता है। मिस प्लीटर शायद बेटर है उस पे, पर जेट कटर को वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स बोलते हैं भाई गेम पे, स्टाफ ऑफ होमा के बाद। स्टाफ ऑफ होमा जानता है? जोंगली या फिर शाओ का मेन मेन जो वो है ना। इस बार बैटल पास में ये वही वाला दोस्त जो आईफोन नहीं लिया, वो ये बैटल पास खरीदा बस इसीलिए कि तो स्टाफ ऑफ होमा इस बार मिल रहा था तो उसने ले लिया था। बैटल पास पे स्टाफ ऑफ होमा कहाँ मिलता है? शायद था दे। वो तो इस पे विश बैनर पे मिलता है ब्रो। वेपन बैनर इस पे बार आता उस है स्टाफ ऑफ होमा, इस उधर पे बैटल पास पे नहीं मिलता। मैं आज तक नहीं बार बैटल खरीदा। पास के जो तेरे को पता है अच्छा ये डेथ मैच है। क्या हुआ? इधर के कोकोमी का ये जो 5 स्टार वेपन है और ये जो जेट कटर है ना, मेरे को एक ही वो पे मिला था, एक ही 10 पुल पे मिला था। 10 पुल में 2 वेपन। हाँ 2 वेपन। और इधर अभी जो जोंगली का बैनर आया था ना, तब मेरा 20 पुल पे 3 5 स्टार निकला था। good things come to those तभी who मेरे don't पास wait. जोंगली और टाइनारी दोनों है। That's what they say. Knowing इस my पुल luck, में 2 the opposite 5 is स्टार। 3 5 स्टार मिला था। कौन कौन? एक जोंगले, एक पहला तनारी और जोंगली निकला, फिर चीची आई, हाँ फिर टाइनारी आ गया। बाप रे बाप, तो उसको रिकॉर्ड करना था क्या? क्या? रिकॉर्ड किया उसको? रिकॉर्ड ही किया उसका? हाँ शायद स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम भी। भाई एपिक होगा साला, मेरे भी निकलता था तो मैं उछल जाता। 3 5 स्टार अरे जिंदगी भाई नहीं हुआ। एंथनी और बेन थे इस पे डिस्कॉर्ड वीसी पे, मैं बोल ही रहा था देखे मेरा किस्मत देखेगा, और एक पुल किया टाइनारी आ गया भाई। adventure team assemble. बाप रे, लकीएस्ट ऑफ लक। मतलब ऐसा नहीं कि 10 पुल किया करके, मैं सिंगल सिंगल कर रहा था जोंगली मिलने के बाद। पर फिर भी सब फिर भी मिल जाना बहुत है। अब चलो देखते हैं मेरा पुल में क्या आता है। मेरे बस साथ साला पहली बार हुआ वो, मेरे साथ पहली बार हुआ वो, ऐसा होता नहीं है। तुम बताया था, लेकिन जैसे आगे जाओगे तो तुमको जल्दी जल्दी ये मतलब कैरेक्टर्स मिलेगा। हाँ मतलब ऐसा लगता है मेरे को, पहले स्टार्टिंग पे बिल्कुल नहीं मिलता था ब्रो।
हम्म। बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि मे भी मेरे को ही प्रीमो जम्स वगैरह जमा करने नहीं आता था शायद। हम्म। और कुछ किसको उस मारना टाइम। है? और किसको मारना है? अच्छा, वो शेनॉइड के पास चलो। अश्विनी। चल मैं तेरे को अपना निंगवांग का डैमेज दिखाऊंगा उधर पे। अच्छा, हम दोनों निंगवांग लगा ही सकते हैं ना, चलो हाँ, उधर देखते हैं। लगा सकते हैं। मैं निंगवांग प्लस जोंगली रखूंगा उसके लिए, जियो रेजोनेंस के लिए। तो फिर मैं कैलेक्ट्रा ले लेता हूँ, रुको। अब वरना मैं चाहूँ तो यामी को रख सकता हूँ, फिर वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मारने पे उसका। ना ना ना, अपना आसान मत कर। क्या ले लूँ, कैलेक्ट्रा ले लेता हूँ। फ्रीज में मतलब क्रायो में तुम्हारे पास सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन सा है? आया का मेरे पे यूला भी अच्छा, रखी हाँ है ब्रो। हाँ। पर वो फिजिकल बिल्ड पे रहती है ना, तो उसको हम्म। बेसिकली क्रायो कैरेक्टर नहीं मानता। Don't be हम्म, afraid to हम्म। make mistakes. It's all पर part of यू यूला तो क्लेमोर कैरेक्टर है ना? हम्म। क्लेमोर है यूला, क्या है, हाँ, क्लेमोर ही है। क्लेमर है, क्लेमर है। उसका अगर तू 5 स्टार वेपन पे रखा ना, मतलब हाँ, 5 स्टार वेपन और C0 भी रहा तेरे पे, तो तू 1 मिलियन डैमेज कर सकता है कॉम्बो पे। 1 मिलियन? 1 मिलियन। उसका उसका C6R5 पे, C6R5 Fetch an बिल्ड umbrella पे for me, would you? हाईएस्ट में शायद 4 मिलियन डैमेज देखा था। बाप रे बाप। मैं An मैक्सिमम assassin from our कितना देखा था? homeland. नाइन 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 Or a नाइन कुछ fool था। who वो भी कैसे, वो trespasses मेरे को आज upon the तक समझ waters नहीं of पहली बार लेवल Genshin, 90 जंगली यूज़ कर रहा coveting the shapes of the living. हूँ। आया। इंटरेस्ट ही We नहीं है take on भाई many भाई जाई forms. जंगली वांगली पे मेरे In को। this way, ये we देख, have fought ये to देख मेरे deliver you निंगवांग authority. का डैमेज। The ये power of ये water क्या था? is its एक ability पर to एक take बीस गया, any एक shape. 30 गया, खत्म। ये सब में लगाया हुआ है क्या वो? ये क्या कहते हैं, क्राउन? नहीं, Don't waste my सब पे time. नहीं है। Give up. एक एक बचा होगा, एक एक कोई एक पे बचा है Without अभी solid भी क्राउन ground, करना। terrestrial creatures become अच्छा, simply क्राउन मेरे को बोला था कि useless. गेम में ज्यादा नहीं है, कुछ ध्यान से यूज करना। वही कोई हाँ कैरेक्टर में यूज करना। हाँ, और इसलिए। इवेंट्स वगैरह के टाइम ही मिलता है। पर हम्म। मेरा जिस पे मन किया ना मैं कर देता हूँ यूज़। The power of water मेरा is its यामी को ability चाहे का भी to 2 उसको तो क्राउन यूज take है। any करें ना shape. करें। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं वो, मेरे को कुछ कुछ किया तो मेरे को इसका मिल गया था, ऑफिशियल का एक क्राउन। बिना यूज किए क्राउन वो मिल गया था। अबे इतना क्या भाई 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 भाई, One who is ignorant of क्या होगा? water's treasures तेरे fails तो ऐसे ही मर जा to रहे comprehend its horrors. हैं। जियो रेजोनेंस अच्छा। बहुत पावरफुल है ब्रो, मजाक नहीं कर रहा। हम्म। और देखते हैं कितना डैमेज करेगा। अबे कितना डैमेज किया, मैं तो देख भी नहीं पाया। 17,000, मेरे को लगा नॉर्मल मार। इतना तो नहीं मारती है। थ्री Don't waste थ्री my स्टार time. वेपन है ना जोंगी पे। प्लस अच्छा, वो भी। प्लस लेवल 1 अल्ट का। Give up. It's nothing. अच्छा, कुछ अपग्रेड नहीं किया है? नहीं किया हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं। जोंगली बस शील्ड के लिए बिल्ड किया हूँ और कुछ नहीं। कितना सील्ड का है वो परसेंटेज? कुछ सील परसेंटेज होता है ना? और नहीं, उसका आर्टिफैक्ट सेट भी सही सेट डाल के रखा हूँ तो ज़्यादा होगा। The power पता of नहीं। मैं water तो is its ability मैं to पता है, ये take वाला एक any आर्टिफैक्ट shape. क्राफ्ट मैं फार्म करा था मेरे को। तो मुझसे पूछना था वो आर्टिफैक्ट में, पता है मेरे को ट्रेट ट्रेट नहीं, क्या कहते हैं, क्राउन मिलता ही नहीं है जिससे Wings कुछ। of darkness, come, sever मैं them वो from me. आर्टिफैक्ट कितना भी फार्म कर लो, साला कुछ इससे मिलता ही नहीं। हाँ यार, वो आर्टिफैक्ट फार्मिंग मज़ेदार नहीं है But a ब्रो। small haven of tranquil waters. मैं भी बता Is रहा हूँ that ना, so much to ask? बोर हो जाता था करते As करते। long as rain falls, अरे रुक, नहीं, रुको rivers रुको रुको, flow, कुछ वो नहीं, water रुको will कुछ टाइम से। exist forever. कहाँ गया निंगवान में? तुम क्या आर्टिफैक्ट लगा के रखा है? निंगवांग पे अटैक सेट और वो जियो सेट है। अब जियो में क्या? अभी निंगवांग को बस आर्टिफिशियल। सिंगल क्राउन रखा हूँ ब्रो मैं, डबल क्राउन भी नहीं है। हम्म। अरे मैं पता है इसको, ये सब बहुत सारा मेरे को मिल गया, 3 को बढ़ा सकता हूँ। साला इसको निंगवांग पे बढ़ाने के लिए। हम्म। ग्लैडिएटर्स है 2 पीस, और 2 पीस वो है आर्केक पेट्रा।
वही आर्किक पेट्रा। ये जो आर्किक पेट्रा में फार्म कर रहा था, हाँ, बहुत बहुत टाइम इस लगता है ब्रो उसका फार्म करना। इसमें मेरे को पता कोई भी अच्छा सा वो तो मिलता ही नहीं है साला। तो मेरा सब भी डिफेंस मिलता है इसका मेरा क्या? भी ब्रो, मेरा भी नहीं मिलता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। कुछ रीज़न हम्म। है जिस वजह से कैरेक्टर बिल्ड करना नहीं मज़ा आता मेरे को। हम्म। आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं मतलब मिलते इतने आसानी से। मेरे हम्म, अयाका पे भी फुल क्रायो सेट नहीं है, और 2 क्रायो 2 अटैक सेट है। अगर उस पे वैसे सही ऐसा क्या है, लेकिन उसमें मिल नहीं रहा था। क्रायो पीस भी नहीं मिल रहा था मेरे को, और ऊपर से फ्री टू प्ले होने पे घाटा है। और खराब है। पर निंगवांग पे अच्छा है स्टार्ट्स मेरा, 70 हम्म। 184 प्लस 133 एनर्जी रिचार्ज। देख ओशियन पे ही 4 अल्ट मारा हूँ कम से कम, मे भी 3 मारा था। हम्म। मतलब 133 एनर्जी रिचार्ज अच्छा है। जोंगली पे भी देख 2 अल्ट Seems like मारा the मैं, other अभी भी knights तीसरा already अल्ट have भरा their हुआ है। hands full. हम्म। पता नहीं, बहुत- पर अब अच्छा अरे है जोंगली बिल्ड कर लिया हूँ तो उस पे यूज़ करूँगा ना। हम्म, हम्म, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था, स्पायरल अभी इस पे। और क्या करना पता। हो गया अब तो कुछ नहीं चाहिए। तो क्या आप सुमेर हो जाएगा। मैं बंद करूंगा या तो सोमवार, या तो थोड़ी देर बाद क्रिकेट करूंगा। हम्म, ठीक तो अभी ठीक। वैलोरेंट चल रहा है? हाँ, वैलोरेंट चलेगा कि अभी यही शाम करेगा? अभी जैसे नहीं थोड़ा देर खेलूंगा। मैं सोच रहा हूँ हम्म। काजुहा का जो स्टोरी क्वेस्ट बचा उसको चालू कर दूँ, उसको ख़त्म कर लूँगा कम से कम 3.1 आने अच्छा से हाँ। पहले। अच्छा, स्टोरी क्वेस्ट कितना देर चलता है बिना कोई भी चीज स्किप किए? मैं स्टोरी क्वेस्ट मैं भी आराम से बैठ के पता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत लोग का खुला हुआ है। कभी डिपेंड करता है ब्रो, कभी कभी स्टोरी क्वेस्ट छोटे रहते हैं, कभी कभी हम्म। बहुत लंबे रहते हैं। जैसे हम्म। आर्कोन क्वेस्ट है ना, आर्कोन क्वेस्ट बहुत लंबे रहते हैं। नॉर्मल जो आर्कविन क्वेस्ट तो हाँ, वो तो मैं भी समझ सकता हूँ। पर जैसे नॉर्मल अभी जो कैरेक्टर इस क्वेस्ट रहता है ना वो सब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 घंटे का रहेगा। पर आर्कोन क्वेस्ट थोड़े ज़्यादा लंबे, ऐसा मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। कोकोमी का जैसे मेरे पास है, अल्बेडो का है, कोई कोई कैरेक्टर है जिसका खुला हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो काजुआ का बचा है। अब मैं कितना सारा वो बचा है ब्रो, अभी हैंगआउट्स बचा है। निंगवांग का करूँगा हैंगआउट। हैंग आउट उसका नहीं किया है? हाँ, हाँ, वो तो मजा आता है करने में। क्या मैं कर। उसका हैंग आउट पूरा किया था, बहुत मजा आया था वो करने में। चलो कायदा हर काजुहा का एसर प्लाम पाम पामटम चैप्टर एक्ट 1 करते हैं। इसको खोलते कैसे हैं रे। क्या पता, देखना। ये रहा, मिल गया। The value of knowledge cannot simply. रेजिन खत्म हो गया मेरा, फालतू हो गया। टाइनारी का भी बिल्ड क्या तगड़ा है भाई, मेरा मज़ा आ गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रुको, तेनाली का बिल्ड देखने का अभी टाइम मिला, रुको बस मेरे देखता पे हूँ। डेंड्रो डैमेज बोनस वो नहीं है, उसको क्या बोलते, पीस हम्म। नहीं है। पर हम्म। एलिमेंट्री मास्टरी डाल के रखा हूँ, वो भी चल ही रहा है, अच्छा डैमेज दे रहा है। देखते हैं सर आर्टिफैक्ट्स। ये क्या वॉन्डर थ्रो? अच्छा हाँ, ये जो मिलता है क्रिट डैमेज। पहले ये देखता हूँ। क्रिट रेट 33, क्रिट डैमेज 133, अटैक। अच्छा, क्रिट रेट। टाइनारी पे मैं जो वेपन डाला हूँ वो एलिमेंटल मास्टरी के बेसिस पे वो करता है ना डैमेज। चल। एलिमेंटल Sparrowland मास्टर since we कितना first रखा है? set foot on अच्छा, Genshin. 434 रखा हुआ है। So अच्छा, many things have happened since then. लेकिन ये सब तो तुम क्रिट का Yeah, ही we've लगभग रखा है। definitely made some progress on our journey. हाँ, अगर गान्यू रहता So, ना तो उतना ज़्यादा where क्रीट should we रेट go नहीं चाहिए now? रहता। उसका 4 पीस हम्म। क्रायो सेट पे ना वो करता है डैमेज। हम्म। Huh? तो ज्यादातर What's देखा हूँ up? क्रिट और अटैक पे मेन फोकस है, या तो एलिमेंटल मास्टरी। ओह, क्वेस्ट चालू हो गया।
हम्म, What the heck was that for? मेरे स्ट्रीम जा, तेरे को उसका टाइनारी का डैमेज दिखा रहा हूँ। Huh? Alright, What? अच्छा convince him to calm down a little. अरे वही Ha! Can't see. अच्छा हाँ लाइव Ha! मैं कितना बो शॉट मिस करता हूँ भाई। Can't move it. ये क्या कर रहा है? Right मैं here. सारा बो शॉट मिस कर दिया भाई। So you स्ट्रीम don't have a लैग कर vision रहा है after क्या? all. कि स्ट्रीम Since क्वालिटी they का मतलब mistaken me for क्वालिटी someone else. क्या हो गया? At स्ट्रीम the का क्या very हो गया? least, you should make sure you got the नो right इधर person इधर before you go attacking them. अच्छा मेरा से No, क्वालिटी wait. कम किया है। Even when you've got the right person, रुक जा, मैं you देखता shouldn't हूँ। go attacking them out of the blue. ना ना It's ठीक है तुम्हारा। dangerous. Have you अच्छा ever तो met है। someone by the name of Kaedahara हम्म, Kazuha? मेरे से गड़बड़ था। He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an anima अरे vision. आयाटो को यूज किए That's क्या? none of your नहीं। business. आयाटो कैसे कैरेक्टर है? अच्छा है, जहाँ तक मैं सुना अच्छा है। Never mind. You don't आयाटो look से like भी you ज्यादा know अच्छा है। anything anyway. I'm wasting my time. अब वो तो नहीं बता पाऊंगा ब्रो, मैं क्योंकि आया तो रखा हूँ पर यूज नहीं This करता। guy's problem. Coming around here waving that वही weird देखा sword एक भी in our आर्टिफैक्ट तुम्हारा नहीं लगा। faces, and he didn't even apologize. मैं जितना भी Seems अनबिल्ड like a कैरेक्टर है real सबको डाल के nutcase. रखा हूँ प्रोफाइल पे। Well, one thing's for sure. No आप तो lawyer इसमें will telling पर him अब टाइनारी anything और about जोंगली बिल्ड हो Kazuha. गए हैं। मेरा कचिंग भी ऑलमोस्ट बिल्ड ही है, पर उतना डैमेज नहीं करता वो, Anyway, करती वो। just to be on the safe. Oh, what kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. हाँ एक Then सेकेंड, again, most people मैं आ look रहा pretty ना। much the same once they start riding, so that doesn't really prove anything. सॉरी कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ बोल रहे थे ऊबर। यूबर यूबर ऑनलाइन है क्या? आ गया मैं वापस। Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. देखना मेरे को ये काजुहा के I क्वेस्ट पे heard होगा that the क्या। Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. A strange and friendless road। काजुहा का सब तो हम लोग को पता ही है, तो एक्स्ट्रा उसमें क्या है? पता नहीं, मेरा ये एक क्वेस्ट बचा था, देख लेते हैं क्या है इस पे भी। मैं बताऊं सच में, पर मेरे को काजुआ का क्वेस्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कभी भी नहीं लगा। कल स्टोरी तो बढ़िया है। ठीक है। Hey, hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time
As soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? अच्छा योबो है तुमको ग्रिम का सेज गेम प्ले कैसा Like लगता है that, it all makes क्या का? sense. In that case, his ग्रिम newfound stardom is well ग्रिम deserved. नाम है ना सेज He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. सेज They said खेलता they है had बहुत something important to भयानक discuss सेज with him. खेलता है I thought they'd come to arrest him at first. I mean- Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely Ranked matches पे ठीक है, unimaginable. बट एज अ प्रोफेशनल मैचेस के जैसे वीसीटी वगैरह पे वैसे यूज़ किया ना तो इजी जीजी हो जाएगा फिर गेम तो। क्या है Guess we'll go pay a visit सेज to का the यूटिलिटीज Tenryo फिर क्या Commission. काम का? All right then. I'll just stay here हाँ and carry on trying to fend लेकिन off the उसका crowd. हील और रिवाइव तो काम का है वॉल कभी कभी क्या कभी कभी फालतू सेज का वॉल डिले के लिए रहता है या फिर प्लांट या डिफ्यूज के लिए काम आता है। हम्म। अच्छा मेरे को तुमसे ये भी पूछना था पता है मैं अपना क्रॉस हेयर एनिमी पे लगा रहा हूँ फिर भी पता है मेरा शॉट्स जा नहीं रहा हूँ कसम वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी शूट करता होगा, मतलब अगर घोस्ट वगैरह पे है, क्लासिक वगैरह पे है, अगर जल्दी जल्दी टैप कर रहा है ना तो स्प्रेड फायर होगा। वो नहीं वैंडल से मान ले मैं पीक लिया ठीक है मेरा मेरा एम भी एनिमी पे एनिमी का भी एम मेरे पे फिर भी उसका लग जाता और मेरा नहीं होता सब पिंग डिफरेंस क्वेश्चन मार्क। मेरे को हैरी पॉटर देखने का मन कर रहा है भाई। हैरी पॉटर अच्छा है बहुत लोग बोला है देखना है बहुत लोग उसका वो भी पढ़ के भाई मैं पूरा का पूरा 8 मूवी कम से कम 40 से ज़्यादा बार देखा हूँ। 40 से ज्यादा बार बाप रे बाप। तो हिंदी में इंग्लिश में किस में दोनों हिंदी में, में तो बहुत बोलता है क्रिंज है Greetings. दोनों में। We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, मतलब ऐसा नहीं कि very 40 बार welcome to इंग्लिश में listen in on 40 the बार हिंदी में नहीं, conversation. ऐसा नहीं, We invited मतलब Mr. Kyle कुछ बार to हिंदी में और extend कुछ बार a इंग्लिश में gesture ऐसा of बोल रहा हूँ। goodwill on behalf of the show. समझ रहा हूँ Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun अब has जब से issued a मूवी large देखना array of छोड़ा हूँ ना directives aimed at तब resolving तक कुछ or देखने ही at नहीं least पाता। easing the tensions that have built. The Tri-Commission has made the मैं recommendation देखता to use मतलब this वेब सीरीज opportunity to है restore the honor regarding the history कुछ of the चालू Kaidahara करूँगा clan. देखना, I trust कुछ that ना you're कुछ already काम आएगा फिर मैं somewhat देख ही नहीं informed. पाता। In short, there was once a या group फिर of कभी-कभी but there बोर हो came a जाता हूँ तो time when बंद some कर of देता these हूँ। bladesmiths revolted and बोर fled to होना Station तो Island. बहुत खराब Both है the मैं भी Kaidahara बोर and होता हूँ बंद कर Kamisato देता clans हूँ were held accountable फिर for साला lax oversight वापस देखता हूँ तो and पता into the चलता है period इतना of बढ़िया Meiji. चीज मैं छोड़ दिया We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering अरे Mr. डिस्कॉर्ड में Kaidahara आने has से once more made वैलोरेंट an का आवाज नहीं outstanding आता contribution to Inazuma, the Almighty आता Shogun है? believes he should not only be rewarded for his achievements, इससे मेरे but को also वायर receive वाला हेडसेट recompense लगाना for the पड़ेगा excessive अच्छा हुआ punishment borne पैनकेक by म्यूट his कर clan दिया in था the वरना past. कॉपीराइट आ जाता। In the interest of preventing further अरे harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we मैं chose पहले not से ही to म्यूट करके publicly रखा था release the उसको, findings of our बच गया। investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. उतना I पुराना am सॉन्ग delighted में to be in a कॉपीराइट position to आता है receive the goodwill of the क्या? Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached?
I can assure you that nothing क्या could be ब्रो further from the सुन नहीं truth. पाया क्या We बोला तू seek only to correct a माइकल past जैक्सन का injustice. अर्थ सॉन्ग है, With the बहुत Kaidahara पुराना सॉन्ग clan's नहीं, कॉपीराइट reputation की and हुई है। occupation restored, the अब वो Kaidaharas will be कोई कंपनी bladesmiths ओन once करता more, होगा ना शायद and सोनी your बाई कर wanderings लिया will था माइकल finally come जैक्सन to को an डेथ के end. बाद You will be able to lead a safe अच्छा and तो prosperous life in कॉपीराइट Inazuma ऑब्वियसली City, with अभी the भी आ ही almighty सकता Shogun's blessing and full support of the अच्छा। Shogunate. I have grown accustomed to life among the माइकल elements. जैक्सन तो एक पूरा I fear लेबल I था would ना, no सोनी longer ने feel उसको at खरीद home कैसे behind the लिया? tall walls of a एग्जैक्टली stately मुझे भी नहीं abode. पता Yet my ancestors did indeed take great pride in पर the name of वैसी कुछ ही तो मैं Kaidahara सुना था एग्जैक्टली मेरे and the को art सच में of blade एग्जैक्टली नहीं making पता for क्या which है it stood. अच्छा। I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so क्लासिक much सॉन्ग praise that तुमको we कैसा almost लगता है यार wondered whether युवक? there was या another फिर जो Kaidahara सॉन्ग जिसमें around इंस्ट्रूमेंट town. ज्यादा? Well, to some, the क्या Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. इंस्ट्रूमेंट्स वाला Kaidahara really सॉन्ग्स कैसा parried the लगता है? Shogun's strike. अच्छा लगता Also, eyewitnesses saw favorite him कौन using सा the power जगह of है? Electro in addition to that of Animo. As a तेरे को result, एक बात but बताऊंगा also that मेरे म्यूजिक Kaidahara का टेस्ट Kazuha ना was using बहुत a ज़्यादा delusion वाइड है began ब्रो to spread. बहुत ज़्यादा What? सब कुछ भी अच्छा लगता है। मैं अभी भी Doesn't make 1980s का sense. सॉन्ग सुनता हूँ जब Using मन a करता है तो delusion turns you old सेम, and frail. कोई दिक्कत नहीं। Kazua's still 2010 तक के गाने बहुत That तगड़े is correct. However, to some people, the idea 2000 of a single जो person पिछला moving डेकेड 2 था उस elements पे at भी once अच्छे is अच्छे a सॉन्ग्स more आए थे पर inconceivable 2020 के notion बाद जो भी still. गाना आता है ना This बॉलीवुड is या इधर just पे one मेरे को of नहीं many सुनने का मन similar करता rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or अच्छा आता stardom होगा my अभी way. भी पर But मेरे को पता नहीं perhaps क्यों if the सुनने का मन नहीं Shogunate is करता willing to publicly कोई support कोई me, सॉन्ग्स रहता है जो this अच्छा और लगता फिर है। situation will इलेक्ट्रॉनिक blow over म्यूजिक more में कभी quickly. ना बोलता ही नहीं मैं This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. इलेक्ट्रॉनिक It से stands to बॉलीवुड को benefit सब all भी। of us. नहीं इंग्लिश इंग्लिश होना Please allow चाहिए me some time to consider. मेरे को In मेरे fact, को let us उससे put this discussion on रशियन hold चाहे for कोई the और भी moment. टाइप का गाना हो ना सब अच्छा लगता है। Well then, what brings the two of you here? मैं वही मेरे को भी कभी कभी कई लैंग्वेजेस समझ नहीं आते पर सुनने में बड़ा मजा आता है वही तो। Why would such a dangerous individual be looking for me? अरे भाई No, भाई मैं गोल्ड this puzzles कितना me खेल as रहा much हूँ as कि it does you. कहाँ का भाई बहुत My गंदा fighting बोलते हैं। forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. सुन नहीं पाया We क्या बोल रहा undergo तू rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be भाई fairly गंदा। assessed for quality. अरे Over time, these गजब हो रहा है techniques भाई। came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back. This guy was a serious nutcase. Indeed, he sounds highly aggressive. अरे मैं Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. क्या हुआ? Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. तेरे को हील चाहिए तो पीछे आना। Come on. Let's go and track down your aggressor. खराब है भाई। The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say.
No sound. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of Mora? Whoa! Oh, wait. Even at that price... तुमको पता है वो साला एक आदमी बैठ के मेरे पे स्प्रे कर दिया मेरे को लगा इजी हेडशॉट होगा असल उसका बॉडी लग गया Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. Oh, that does make sense. Uh-oh. Looks like the trees are run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma? Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt.
out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. I'll... बैठो कैंप में। Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were Oui, oui, both oui, members oui. of the Raiden Gokaden. Historically, there We have always found- been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing, yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person.
He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Either snowman. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what?
If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home, now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Working off what we know so far, there are too many things that don't add up. The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Ame no Mayuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. No.
Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. Huh. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself alone. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Haima was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, quiet your mind. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and seems to be dissipating slowly. Whoa! Look at all those hilly trails! They're acting really strangely! Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look.
लगता है ये खाली कर दिया है ये पे कोई नहीं है Look at this red fuck stuff. यार कैंप By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. यहाँ पे यहाँ पे According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes, right now we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right. So let's get moving. I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and all the clues that at first seemed disparate and disconnected. It seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also... Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaidehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenoma Yuya that stands before us. But what if instead of facing Amenoma Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Amenoma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me,
he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaidahara 80 clan, 80 20 you should HP. be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. वाइपर नहीं संभाल पा रहा है I वाइपर नहीं seek but संभाल पा one रहा है thing, to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaidahara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Oh, they got the Odin, bro. Right here. Allow me. Join me and sever that divine The light. wind knows me. Shall rewrite Right now. history. Emerge. To me. Do not stand in my way, or I will strike you down too. Your bluff's fooling no one. You've... Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure by any means necessary and any medium available. I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art, but from your movements, I sense only hatred and arrogance, कर लिया as कि well होगा as इसका a quest? thinly veiled कर रहा mania हूँ। and despair. क्या स्टोरी बता तो You can tell all that just from his moves?
As I've mentioned um, before, the forms of Ishin art convey the आगे बस user's ये लोग thoughts पता and कर रहे हैं, feelings. 2 लोग गायब हो Since the गए blade is उसके बारे currently में। possessing Aminome Yuya's चल रहा है body, अभी its चल ही रहा है और movements क्या। express the innermost thoughts of the blade. तो उसमें If you ask काजुआ me, का बस the ये mania स्किल्स is यूज करने probably दे due रहा to your desperate, हाँ, क्योंकि single-minded अभी एक बार ambition. किया। You believe I am your only hope. Are you trying to है। claim that I काजुआ am भी helpless वेंटी जैसे without ऊपर you? उड़ जाता है ना। पर उसके उतना On ऊपर his नहीं जाता। deathbed, he passed to me उसका all of आर्ट से Ishin उड़ता है Art's कि secrets. इस The ई little से that you know barely दोनों के scratches ई the से ही जाता है। surface. In that regard, दोनों why के would होल्ड I ई से ever जाता है। need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved ये grew. आर्सेनल And कौन the है भाई? more you wished to run from the क्या truth. चीज? But the way I see आर्सेनल it, करके तुम्हारा कोई दोस्त what है क्या? began as an ambition has long है since तो, become पर a मेरे को याद delusion नहीं of वो है fantasy. कौन। What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called... It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Aminome Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha!
This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. Have a chance here to save an innocent victim. Your disdain for me betrays your woeful now. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the adventure. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. What about Amenoma? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Are we sure this is a good idea? Okay, fine. Leave everything on this journey to me. One with nature. Finally, it's my lucky day. The wind knows me. My blade! Fallen leaves. Adorn my night! One with nature. The fury! How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me,
He's instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. यार कोई हेडशॉट मार देता है It's my lucky day. There's more. See no more. Boom. The wind knows me. Finally. The fairy. There's more. Finally. Let's get down to business. One with nature. Clouds high. The birds call. Into the wind. Whoa! Something's up with the blade. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. I cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. क्या? डोनट प्लैटिनम 3 है वो डायमंड 1 पहुंच गया था ब्रो, डी रैंक हो गया कल. बाप रे बाप भाई But what would that do to Amanome Yuya? डोनट का I will ये be careful with गंदा है भाई. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Time to go. डोनट अपना एम प्रैक्टिस नहीं करता ना, उसको पहले से ऐसा है ना. पहले का मतलब उसका हमेशा से खेलने का आदत था ना, शूटिंग गेम. तो बस वही. One with nature. ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Into the wind. क्या हो रहा है? The wind knows. क्या भाई? Fallen leaves. Adorn my night. Fall before me. Into the wind. I'm ready. Cut down. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, पक्का you मैं. wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are. Take them down. Where do they keep coming from? Yup. We can help this time. Don't worry, I'll use my own blade. It's just more of the same. One with nature. Time to go. How's this?
Into the wind. As one with wind and cloud. The wind knows me. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya,
the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting... He seems to have calmed... When I look, I once told him, but darkness. Not only did I fail to fulfill his ambition. You are finally seeing Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ahmed, but I still cannot bring myself to forsake his ambitions. It is the... So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. I utterly if a duel can... I do not wish... There's no... Thanks for your help. All right, then let's move more Ronin. In any case...
This reminds Paimon a bit of the crux. Yep. Still. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin art. Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Time to go. Fine. Into the wind. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! Into the wind! That hurts! One with nature! Into the wind! Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone, and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedahara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedahara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to... I'm not sure. Okay. Amenoma smoothie. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prize? But I have some... Really? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after... I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. You... But... He... Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness.
adventure! You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait! Shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation, and it's also time to give him a response to the offer he made me. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please, take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya.
That would not... You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Todoko. 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 I charge a higher rate to meet up.
Let's move before the trail goes cold. Oh my god. Let's get down to business. Let's move out. Let's move out. It's my lucky day.
king. It will be faking me out. Can't make you happy enough. Sometimes all I think about is you. Late night in the middle of sun. Right here. Emerge. Right now. Rest and rebuild! Right here. Emerge. I told you long ago, I know I'll be waiting for. Ah. La 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 la. Go on. Open it up. Show me what's inside.
I told you long ago. Oh, I have to level up Dainari's level, skill level. I need 6 more of these, okay. A sight to behold. Oh my god, I'm so good that I wasted my all. Right here. This realm is... Ah, If look you at ever have it... Ah, look at the way. Ah, look at the way. Luminescent pollen. Luminescent pollen. Craft.
Luminescent pollen. So I need these. Shit. Hello, what do I? Wait 1 second. I need 24 of these. Goddamn. Emerge right now. Come on out, right here. Can't see? Let's nip that in the bud. Keep up. Hold the line. Boom! Ha! Ta! One with the forest. Keep moving! Bring it on! Emerge right now, right here. Rest and rebuild. I hear everything! Right now, right here. Emerge. Hold the line. Enshroud! Right here, right now. One with the forest.
Enshroud! Yeah, yeah. Truth hurts! Like a lamb to the slaughter. Fracture! Yeah! Right here. Where do you Emerge. think you're Right here. Rest and rebuild. One with the forest. Bring it on! I'm liking the look of this. Right now. Right here. I'm always watching. Right now. Right here, right now. Emerge. Allow me. Enshroud! Let's nip that in the bud. Ha! Ta! Ha!
Can't see. Rest and rebuild! Can't move it! It hurts! Enshroud! Right now, right here, right now. Don't tell me that's everything. Right here. Can't see. I'll uproot you. Ha! Boom! Ha! One with the forest. Right now. Emerge. Right here. Segla! Fracture! Emerge. Right now. Emerge. Enshroud! Smells like something good is inside. One with the forest. Hold the line. Right here. I hear everything. Ha! Keep up. Why is there a chest here? Emerge. Right here. Emerge. Right here. Keep moving! Yeah!
to behold. Emerge, right now. Emerge. I think we can forgo the lost and found report. I'll uproot you! Ha! Can't see? Right here. Emerge.
right here. Emerge, right now. Let's nip that in the bud. Ha! Hoom! Sa! Hoom! Keep up. Ha! Sa! Ha! Emerge, right here. Allow me. Confess! Bring it up! Torrent, bring refuge. Emerge, right now. Emerge. One with the forest. Yeah! I'm liking the look of this. Yeah! Right here, right now. Settle! Let's just hope the rain hasn't washed all the clues away. Yeah! Right here, emerge. I'm always watching. Right here, emerge. Right here. Can't see. Hoom! Sa! Hoom!
Keep up. Sa! One with the forest. I'll uproot you. Hoom! Sa! Hoom! Hold the line! Emerge. Right now. Emerge. Can't see. Fracture! Right here. Right now. Rest and rebuild! Emerge. Right here. Confess! Bring it on! See, just follow my intuition.
Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. See you guys later. Bye bye.